फाइंड द सीजी ऑफ द एरिया ऑफ द कार्डियोइड आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब तक हमने बहुत बार इसको ट्रेस किया है। तो बच्चों सीजी में सारे पॉइंट्स लिखना जरूरी नहीं है। ट्रिक क्या थी? सोने का पत्रा, सोने का पत्रा या स्कॉर्पियो का पत्रा या स्टील का पत्रा, ये ट्रिक थी। पोलर कर्व के लिए सिमेट्री चेक करना जरूरी नहीं, पोल जरूरी नहीं। आप चाहिए तो कर सकते हैं सिमेट्री का। कैसे रहेगा सिमेट्री अगर चेक करना है तो? आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, ये कॉस है ना, तो रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, इक्वेशन रिमेन अनचेंज। सो सिमेट्रिक अबाउट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री लाइन। चाहिए तो लिखो रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा, cos of minus theta is just cos theta, implies that equation remain unchanged, implies that symmetric about theta equal to 0 degree line. Okay, now I'll replace these angles. Since it is symmetric about theta equal to 0 degree line, which is nothing but x-axis, so I'll put this value 0, 45, 90, 135, 180 in the equation and find the respective value of r. So if I put 0, cos 0 is what? 1, 1 plus 1, 2, 2 into a, 2a. After that cos 45, 1 plus cos 45, I'll get 1.7, 1.7a. Cos 90 is 0, 1 plus 0 is 1, 1 into a. Now cos 135, 1 plus cos 135 0.29. ये वैल्यू लर्न हो जाते बच्चों कुछ दिन के बाद, है ना? 1 plus cos 180, cos 180 is minus 1, plus 1 minus 1 is 0, 0 into a is 0. तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। हमने आज तक न जाने कितनी बार कार्डियोइड ट्रेस किया है, आपने भी देखा है। कर्व ट्रेसिंग में किया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स में किया था, उसके बाद में बहुत सारे टॉपिक्स में किया था। आगे अब बच्चों ये कार्डियोइड में थीटा इक्वल टू जब 0 डिग्री है, when it is 0 degree, the value is what? 2a. Let me mark it for you. Let me say this is 2a. ये वैल्यू जो है इसको मैं बोल देता हूँ 2a है। So next at 45 degree, theta equal to 45 degree, the value is 1.7. 1.7 is somewhat like this. Just mark 1.7a. After that it is 90 degree, it is just a. I'll copy this value and paste here. This is a. After that for 135 degree, this was for 90 degree. For theta equal to 135 degree, the value is 0.29. 0.29, it is somewhat here. At 180 degree it is 0. So you just need to mark the curve. I'll draw the curve for you. ये कर्व सिमेट्रिक है, तो दिस इज कार्डियोइड। ओके, ये कार्डियोइड बन गया। अब इसका सीजी लोकेट करना है। क्लियरली सीजी ऑफ द कार्डियोइड लाइज एट व्हाट? एक्स एक्सिस। सीजी यहाँ पे कहीं तो भी लाई करेगा। लेट मी से दिस इज सीजी। सीजी क्या एक्स एक्सिस पे लाई करेगा? x bar comma y bar. Clearly it lies on x axis. On x axis y bar is always what? 0. So I must mention it is x bar comma y bar. Here clearly y bar is what? 0. So I'll write next step. Step number 2. Clearly CG lies on x-axis. It implies that on x-axis y bar is what? 0. Step 2. Now I only need to find is what? X bar. X bar's formula is what? Double integration. It is an area, so I need to use double integration. X dx dy upon double integration dx dy. इट इज अ पोलर कर्व। पोलर कर्व है तो पोलर वे से या पोलर स्ट्रिप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
चलो फिर पोलर स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। पोलर स्ट्रिप कैसे होगी, लेट मी ड्रा इट फॉर यू। ये पोलर स्ट्रिप है। पोलर स्ट्रिप के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है? r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। r इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। और ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव करेगी? ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी बच्चों? 0 टू पाई। मैं हाफ इसका निकालूंगा क्या? यस, व्हाट आई विल डू इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री टू पाई करेंगे और उसको 2 से हम क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मेरा कर्व आ जाएगा, टोटल एरिया ट्रेस हो जाएगा। आई विल डू 0 टू पाई। तो देखो ये क्लियर हो गया सारी चीज़ें। x की जगह पे क्या पुट करेंगे? r cos थीटा, y की जगह पे r sin थीटा, dx dy की जगह पे r dr d थीटा। सही है, चलो अभी पुट कर देते हैं। r के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 टू a 1 प्लस है ना, 1 प्लस कॉस थीटा। फिर थीटा के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई। ओके, चलो काम चालू कर देते। फिर x बार इक्वल टू लिमिट्स, इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए रहते हैं? r। आउटर लिमिट्स हमेशा थीटा के लिए। ओके, यहाँ पे नीचे भी इंटीग्रेशन लूंगा मैं। इनर लिमिट्स में r, यहाँ पे कौन है? थीटा। ओके बच्चों, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिमेट्री यूज करने वाला हूँ। थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई नहीं कर रहा हूँ, 0 टू क्या कर रहा हूँ? पाई कर रहा हूँ। तो ये उसका 2 था। r का सिक्का तक 0 से लेके a 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे a 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, आफ्टर दैट अंदर x की जगह पे r cos थीटा, dx dy की जगह पे r dr d थीटा, यहाँ पे डायरेक्टली r dr d थीटा। ओके, इट्स फाइन। अब हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप, आई विल कैंसिल आउट बोथ दिस टू। Inner limits are not constant, they are function of theta, so I cannot take integration separately. I will have to do step by step. Theta's value is from 0 to pi. Here cos theta must be constant, treated constant, as I am integrating with respect to r initially. Okay, r into r square. What is the integration of r square? It is r cube upon 3. Limits 0 to a 1 plus cos theta into d theta. Okay, after that integration 0 to pi. What is integration of r? R square upon 2. Limits 0 to a 1 plus cos theta into d theta. I'll just move these terms here. Now it is fine. Now what to do? I'll reduce this size. Okay. यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 to pi cos theta as it is, अपर लिमिट a क्यूब 1 प्लस कॉस थीटा का क्यूब माइनस लोअर लिमिट r की जगह पे 0। ये 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। यहाँ पे भी 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन 0 to pi a 1 प्लस कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 0। डी थीटा नीचे भी है, डी थीटा
ऊपर भी है. After that, what should I do? I'll just take this 3 down and 2 upwards. 2 by 3. Moreover, यहाँ पे देखो नीचे a स्क्वायर है, ऊपर a क्यूब है. तो इसका आंसर कैसे आएगा? 2a by 3. 2a by 3. Okay. Then what it is? a बाहर आ गया. Cos into integration 0 to pi cos into 1 plus cos theta cube. After that, in denominator, and what will I do? Integration 0 to pi 1 plus cos theta square into d theta. Next, what will I do? 2a by 3 as it is. I can write it like this. Integration 0 to pi, this cos theta remains as it is. What is 1 plus cos cube theta the whole cube? It is 1 plus 3 into 1 square cos theta plus 3 into 1 into cos theta plus cos cube theta. 3 into 1 into cos square theta into cos cube theta. The whole thing into d theta. After that, in denominator, integration 0 to pi 1 plus bolo 2 cos theta plus cos square theta d theta. After that, I'll take this cos inside. It is just 2a by 3 integration 0 to pi cos into 1 is cos theta plus 3 into 1 square into cos, this is 3 cos square theta plus 3 into cos cube theta, cos into cos cube, cos raised to 4 theta into d theta. After that, integration 0 to pi 1 plus 2 cos theta plus cos square theta into d theta. Okay, I'll just copy. Now what to do? Let's have a look. 2a by 3. This is 2a by 3. Integration 0 to pi cos theta d theta plus thrice integration 0 to pi cos cube theta cos square theta. Okay. Cos square theta into d theta plus thrice integration 0 to pi cos cube theta d theta plus integration of 0 to pi cos raised to 4 theta d theta. After that, let's have a look. Next term, bola. Integration 0 to pi 1 d theta. 2 constant, integration 0 to pi cos theta. Okay. After that, plus 0 to pi cos square theta. Okay. Into d theta. Okay. Now I'll give you one formula. Integration of cos 0 to pi, integration 0 to pi cos raised to n theta d theta. इसका आंसर होता है twice 0 to pi by 2, twice 0 to pi by 2 cos raised to n theta d theta
if n is even and it is 0 if n is odd. Now here what is the power of cos 1 है, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आएगा 0. अगर आप ओरली भी करते हो तो भी 0 आएगा. कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा इज व्हाट sin थीटा. फिर व्हेन यू पुट अपर लिमिट sin पाई इज 0 माइनस sin 0 इज ऑल्सो व्हाट 0. सो द आंसर डजंट चेंज. तो n इज ऑड तो आंसर्स क्या आएंगे 0. तो यहाँ पे किस किस का आंसर 0 है? इसका क्या आएगा 0, इसका क्या आने वाला है 0, इसका आंसर क्या आने वाला है 0 और बस. तो ये फॉर्मूला यूज कर दूं क्या? चलो 2a/3. Now let's have a look. First value is 0 plus thrice cos square theta. What should I do here? I must multiply it by 2. Multiply it by 2. It will turn out to be 0 to pi by 2 cos square theta d theta plus 3 into 0 0 plus twice 0 to pi by 2 cos raised to 4 theta d theta. Here integration of 1 d theta is just theta 0 से लेके पाई प्लस ट्वाइस इसका 0 है तो डायरेक्टली मैं 0 लिखता हूँ प्लस ट्वाइस 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? लॉजिक यहाँ पे. अब आगे आंसर कैसे रहेगा 2a/3 3 into 2 here in bracket. What is the integration 0 to pi by 2 cos square theta? Reduction formula. It is 2 1 pi by 2 plus twice integration 0 to pi by 2 cos raised to 4 theta 4 3 2 1 pi by 2. After that pi minus 0. After that twice. What is the integration of cos square theta? 2 1 pi by 2. Now what to do? 2 2 cancel. Here also 2 2 cancel. Here also 2 2 cancel. Okay. ये 3 3 नहीं, ये बीच में प्लस साइन है 2a/3. Okay. Here it is 3 pi by 2 plus 3 pi by 8. Okay. In denominator what it is? Pi plus pi by 2. Okay. I'll put here brackets. If it is confusing for you, please use brackets. Use your brackets. Okay. Now, what should I do? In numerator, 2a/3. Okay. What is LCM here? 8. Okay. Multiply by 4, divide by 4. 4 3 is 12 pi. 12 pi plus 3 pi upon 8. LCM is 2. या फिर 2 pi plus pi 3 pi by 2. Okay. Now here you can divide. How do we do that? 2 1s are 2 4s are. What would you get here is 2a/3 into 1 by 4. This 4 will come to denominator. 12 pi plus 3 pi is 15 pi divided by 3 pi. Okay. So now you can cancel many things like 3 1s are 3 5s are 15. Pi will get cancelled out. 2 1s are 2 2s are. The final answer is 5a/2 no? 2 3 is 6. Is it correct? 5a/6 is the final answer. 5a/6 is the answer. ये x बार है तो clearly CG is what? X bar comma y bar
That is what x bar was 5a upon 6, 0. खत्म हो गया. आगे. Find the centroid of the area x raised to 2 by 3, y raised to 2 by 3 equal to a raised to 2 by 3 in a positive octant. तो बच्चों ये जो है ये क्लियरली कौन है? एस्ट्रॉइड है. एस्ट्रॉइड है. एस्ट्रॉइड कैसा है? ऐसे. दिस इज एस्ट्रॉइड. ओके, दिस इज एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड का पॉजिटिव ऑक्टेंट कौन सी लाइन पे? देखो ये सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स लाइन होता है. क्लियरली y इक्वल टू एक्स लाइन पे इसका सेंट्रोइड लाई करेगा इस एरिया का. एस्ट्रॉइड से रिलेटेड सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कभी भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखना. पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एस्ट्रॉइड आर. बोलो x इक्वल टू a cos क्यूब t, a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t. टुगेदर इज द एस्ट्रॉइड. और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम ऑलरेडी बहुत बार निकाल चुके हैं. इट इज a, 0 एंड दिस इज 0, a. तो बच्चों ये सम सॉल्व करने के लिए देखो x बार y बार निकालने के लिए पहला आप x और y में से कोई एक निकालो तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. क्यों? रीजन देखो क्लियरली. CG ऑफ एरिया इन पॉजिटिव octant lies on which line? X equal to y line. X equal to y line. It implies that x bar equal to y bar. तो x बार फाइंड करो नहीं तो y बार फाइंड करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो मैं यहाँ पे x बार फाइंड करता हूँ. x बार क्या रहेगा? डबल इंटीग्रेशन x dx dy डिवाइडेड बाय डबल इंटीग्रेशन dx dy. What will I do here is I'll take a vertical strip. I'll take a vertical strip. तो बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप जब लूंगा नीचे y की वैल्यू क्या रहेगी? 0. और अपर पार्ट कहाँ पे लाई करता है? कर्व पे. कर्व कैसा है? x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t. ऐसा पूरा कर्व है. तो आप बच्चों कैसे करना? देखो यहाँ पे y की वैल्यू है ना, y ही रखना. y की वैल्यू y ही रखना. हम आगे चल के y की जगह पे a sin क्यूब t रख देंगे. y की जगह पे आगे क्या रखेंगे? a sin क्यूब t. क्लियर है? ओके. अब और dx की जगह पे क्या रखेंगे वो भी मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ. dx की जगह पे इसका डेरिवेटिव रखेंगे. dx की जगह पे क्या रखेंगे? dy की जगह पे क्या रखेंगे? ये पैरामीट्रिक कर्व ये इक्वेशंस तय करते हैं. तो dx की जगह पे क्या लिखूंगा बेटा? a एज इट इज. cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 3 cos स्क्वायर t. और cos t का फिर से डेरिवेटिव माइनस साइन t dt. समझ में आ रहा है? ये किसके लिए? dx की जगह पे. और dy की जगह पे क्या आएगा बेटा? a एज इट इज. साइन क्यूब t का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर t. साइन का फिर से डेरिवेटिव cos t dt. दैट्स इट. खत्म. तो ऐसे सब्स्टिट्यूशंस है. ये जो है एस्ट्रॉइड इसके लिए सिर्फ थोड़ा सा आपको अलग बिहेवियर देखने को मिलेगा. ओके. हाँ तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे क्या होगा? इधर नहीं ऊपर ही लिखते हैं. एक्स बार के लिए क्या बोला मैंने? हाँ एक्स के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? हॉरिजॉन्टल सिर्फ 0 से लेके a तक मूव करेगी x डायरेक्शन में. देखो ना x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके a. तो
x के लिमिट्स तो पता है हमें, x के पता है, y के कहाँ से कहाँ तक बोला मैंने, 0 to y। फिलहाल 0 to y लिख रहा हूँ मैं, लेकिन इंटीग्रेशन हो जाने के बाद y की जगह पे क्या रखने वाला हूँ, a sin क्यूब t। ओके, यहाँ पे ऐसे इक्वेशन स्प्लिटेड है ना, तो उसलिए बाद में पुट किया जाता है ऐसे इसमें। x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक है, a, 0 to a, अंदर x dx dy, यहाँ पे बोलो dx dy। इनर लिमिट्स क्या कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। ओके, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y कैसे रहेगा, देखो ये फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे y की जगह पे क्या लिखा है, y रखा है, x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक है, x इक्वल टू a तक है। यहाँ पे x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a तक है। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to a, ओके, x एज इट इज, dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 to y इंटू dx। नीचे बोलो इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे y लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to y dx। ना अप्लाई लिमिट्स, ऊपर इंटीग्रेशन 0 to a x एज इट इज, अपर लिमिट y लगाएंगे, y माइनस 0 dx, और नीचे कौन है, इंटीग्रेशन 0 to a y माइनस 0 dx, अपर लिमिट y, लोअर लिमिट 0। नाउ व्हाट डू आई डू, this is xy dx and denominator it is y dx। अपर लिमिट्स इंटीग्रेशन 0 to a, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन 0 to a, यहाँ पे बोलो xy dx और इट इज y dx। क्लियर है, xy dx और ये y dx है। अब मैं चेंज कर दूंगा, ओके हाँ। तो बच्चों I'll put x equal to what, a cos क्यूब t। मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट, ये इसको है ना कॉपी कर लेता हूँ, यानी मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। कॉपी कर लिया, हाँ, यहाँ तक इंटीग्रेशन हो गया है। तो ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ, I'll erase out this part, writing purpose will be easy for me। I'll erase out this part also, erase out this part also, erase this line also। Okay, where were we? After this step, it is integration 0 to a xy dx, integration 0 to a y dx। I'll recommend put what, these things। I'll put this, put x equal to a cos cube t, y equal to a sin cube t। Now it is fine। तो लिमिट्स के बारे में भी चर्चा होगी। लिमिट्स x के लिए थे, कहाँ से कहाँ तक थे बच्चा, 0 to a थे, बराबर। ओके, अब y के लिए लिमिट्स कैसे करोगे, I'll just show you। I'll move this part here and I'll explain in detail how to fill up this box। Okay, let me call this as star, okay, because when x equal to 0, I'll put here, so 0 equal to a cos cube t, a will 0 divided by a 0, cos cube t equal to 0, then cos t comes out to be 0। When is cos t 0? When t is pi by 2। So when x is 0, t will be what, pi by 2। After that, when x equal to what, a, so let's do it, a equal to a cos cube t, a would get cancelled out, I'll get 1 equal to cos cube t। Again cos t equal to 1, when is cos t 1, when t is equal to, is it correct or not, yes,
cos 0 is 1. Okay, so limits are from pi by 2 to 0, correct? So what would I do? It was initially 0 to a, now I'll do pi by 2 to 0. Denominator also I'll do pi by 2 to 0. Here x, for x I am going to write a cos cube t. For y I will write a sin cube t. For dx I'll write what? I'll erase out this parts. I can change those limits afterwards. Here what would I get? बोलो 3a, a into 3 है ना, तो 3a लिख सकते हैं, 3a cos square t minus sin t dt. Okay, dt. After that in denominator what would I get? Y na, for y it is a sin cube t, right? And for dx I can write again 3a bolo sin square t into what? Into not sin square t, I must write this again, it is dx itself, 3a bolo cos square t माइनस साइन टी dt. करेक्ट है? ओके, अब देखो बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. ये माइनस साइन, व्हेन आई मल्टीप्लाई इट विथ इंटीग्रल, दिस माइनस साइन व्हेन आई मल्टीप्लाई विथ इंटीग्रल, सपोज इफ इट इज लाइक दिस, इंटीग्रल a to b with a minus sign, the limits would change to b to a. Do you know this property? Okay, if I multiply minus sign for an integral with limits a to b, then the limits would change to b to a. So now these limits would just change. Integral, it will become 0 to pi by 2, and in denominator also it will become integral 0 to pi by 2. Here let us check 3a into a, 3a square constant outside the bracket, 3a into a, one more a, yes, a, so 3a square, I'll just a into a square into a cube, so it is 3a cube. In denominator I'll just wait a while, I'll just cancel it there. So we can cancel it, a cancelled out, a cancelled out. Okay, 3 also cancelled out. Now what would I get outside the bracket? Just a. Okay, cos cube t into cos square t, cos raised to 5t. Okay, sin cube t into sin t, sin raised to 4t, sin raised to 4t. I'll write sin first, sin raised to 4t into dt, and in denominator sin cube into sin raised to 4t cos square t dt. Is it correct? Okay, I'll reduce the size of this integration part. Okay. Now how to do this integration part? A, reduction formula, कुछ तो भी upon बहुत कुछ तो भी. Okay, this is even, this is odd, so multiply by 1. If both were even, I would have multiplied by pi by 2. Here again, कुछ तो भी into कुछ तो भी upon बहुत कुछ तो भी into, बोलो, this is even, pi by 2. Okay, न्यूमरेटर में क्या कहा था? न्यूमरेटर में subtract by 1 initially, 4 minus 1
3. 5 minus 1, 4. Okay. Either 4 minus 1, 3. 2 minus 1, 1. Okay. डिनोमिनेटर में क्या कहा था? दोनों को ऐड करके लिख दो. 4 plus 5, 9. 4 plus 2, 6. Now remaining terms how to do? Just subtract by 2, 2, 2, 2. 3 minus 2, 1. रुक जाओ. 4 minus 2, 2. 2 minus 2, 0. मत लिखो. 9 minus 2, 7. 7 minus 2, 5. 5 minus 2, 3. 3 minus 2, 3 minus 2, 1. 1 रहने दो. 6 minus 2, 4. 4 minus 2, 2. रुक जाओ. So we can do it now. This 3 would get cancelled out. More can we cancel? Yes. 3 ones are 3 2s are. Okay. I will just simplify these values and we'll get our final answer. Have a look. 1 into 4 into 2. A into 1 into 4 into 2 divided by 9 into 7 into 5. 9 into 7 into 5 into. Now here 1 into 1. Okay. 1 into 1 into pi. Yeah, pi by 2 will become 2 by pi. 1 into 1 and pi by 2 will become, denominator it is pi, numerator is 2. This 6 into 4 into 2 will go to numerator. 2 into 4 into 2. Is it correct? Okay. Now what all things can get cancelled out? Nothing? Okay. Now 9 5s are 45. 45 7s are? Here 100 and 315 pi. Numerator 4 to the 8, 8 to the 16, 16 4 the 64 to the 128, 128 to the 256a upon 315 pi. Please check. Okay. 256 upon 115. Absolutely correct. Okay. This is the value of what? X bar. Step 4. Clearly. CG is what? X bar comma Y bar. X bar is how much? 256 A upon pi, and here it is 315, and Y bar is also same, 256 A upon 315 pi. So how did we do this? First we drew the arc, we took a vertical strip. This was a parametric equation. Okay, these were parametric equation. We need not write this here itself. Later in the numerical part we will be doing the writing part. This is the parametric equation. Clearly CG of this positive part lies at y equal to x line. So x bar and y bar both are same. We are using the formula of x bar. After that, solving the integral part. In integral part, it was important to note that the vertical strip was from y equal to 0 to y equal to y. Here we cannot mention a single integration for y. We cannot write y equal to a sin cube t directly. We will first integrate it, and later on for y we will be substituting value of y, that is a sin cube t. Okay, this was the new point. The strip would move from left to right, that is x equal to 0 to x equal to a. That is the why the outer limits was x equal to 0 to a. After that, as it was pre-decided, the parametric equation part was used for the substitution purpose. I took the value of dx and dy also for you, but it was not needed to substitute the value of dy. So even if you don't write the derivative part of this, it won't be affecting the solution. For x, it was 0 to x equal to a. Now later on, when I was checking, it turned out to be t from pi by 2 to 0. Okay, the limits pi by 2 to 0 were later on multiplied by a negative sign inside the integration. That negative sign into integral, the limits changed. Lower limit was turned to upper limit, and upper limit was then changed to lower limit when I multiplied it with a negative sign. Later on we used reduction formula, and the answer of x bar was 256a upon 315 pi. CG is what? X bar comma y bar.
2 पेजेस में ही हमारा सॉल्यूशन आ गया, आसान था। नाउ वी विल बी डूइंग 8th एग्जाम्पल।